Okay, good afternoon, all. We will wait for a few minutes and then we will start. Okay. Okay, now there are enough students. We can start. So previous lecture, sorry, in previous lab session, we have already discussed first four chapters. We have completed, and already I have told you that we have actually completed four chapter from your syllabus. We have five chapters, and let me tell you, first chapter is
introduction to cloud computing. Then virtual, second chapter is virtualization and abstraction. Third one is Amazon Web Service, compute and storage. Fourth one is Amazon Web Service, network and security. These four chapters already we have completed. Now next and last chapter is architecting on AWS, that is architecting on Amazon Web Service. So here basically that is a actually AWS review, best practices in terms of security, reliability, performance. So basically this is one kind of theory chapter where whenever you are using the AWS services, what things you need to keep in mind in terms of security, reliability, and certain performance efficiency. Okay, so that chapter we will start. Before we start this chapter, already we have completed all the practicals. Okay, last practical was using the multiple Amazon Web Services, create a project to demonstrate its collaborative use. So already we have discussed in a previous lab session that it is you need to decide what are the services you need to take, right? We have, I think, done EC2, we have done VPC, we have done Elastic Beanstalk, EBS. Okay, we have done you can say IAM, identity and access management. So at least you need to demonstrate with the help of certain practical its collaborative use. Okay, so that is your last practical. Okay, so that you can able to check how you can do the practical. Okay, same way I have uploaded 3 assignments as well. Okay, so same assignments or 3 assignments you need to actually upload in that. Same way, last practical, that was I think create one practical for its collaborative use. Okay, so that is your last practical. Okay, again if you have any doubt. Okay, sir, your voice is breaking. Okay, 1 minute, let me check my connection. Okay, now is it audible? Is it audible? Please reply. Okay, so what I'm trying to say is last practical you need to do it by yourself. Already I think all the reference material has been uploaded, but last practical you need to decide which services you need to take. Okay, for the demonstration of a collaborative use. Now your next chapter is architecting on AWS with respect to best practices. Okay, so let me present my screen and we will I think it can be completed in this lab session only, but we will have, I think we don't know what will be your term and date. So what I will do is I will complete some part of this chapter, and then in later next lab we will complete this full chapter. Okay, so we will start this chapter architecting, last chapter of your syllabus. Let me present the screen. Okay, already this 1 minute, already this PPT has been uploaded. You can check from your e-content, AWS security and best practices. Okay, so here the key topics are how security
responsibility are shared between AWS and customer, how to define and categorize your assets, how to manage user access to your data using privileged account and groups, best practices for securing your data, operating system and network, and how monitoring and alerting can help you achieve your security objective. These are the key topics. So first topic I will discuss, what kind of shared responsibilities in terms of security are shared between AWS and a customer. Okay, so this is require AWS, it requires AWS and customer to work together towards security objective. So what will be the security measures? So first is security of a cloud. So security of a cloud should be implemented and operated by AWS. Okay, so that is the responsibility of AWS. Security in cloud. So security in cloud is the responsibility, and it is an implementation and operated by customer. So if you talk about security in cloud, it has to be implemented by the customer. But if you want to secure cloud, then it has to be implemented and operated by AWS. Shared responsibility model reduces the operational burden as AWS operate, manage, and control the resources, even the physical security where service operate. Now data protection service, how you can protect your data? So simple as that. First one is encryption, second one is create a security groups, and third one is multi-factor authentication. Okay, so customer should be responsible for deploying, configuring, and maintaining the secure baseline within the available services through proper use of encryption, security groups, access assignment, and permission. Okay, so you need to choose a service, you need depending on integration of a service, okay, according to the rules and regulation. Okay, so basically for protecting the data, user must use encryption, create a certain security groups, and use the multi-factor authentication. I think multi-factor authentication, you know, right? If you are using the Gmail ID, it supports the multi-factor authentication where you need to write down your username, password, and again one code is sent to your registered mobile ID, a registered mobile number. And if you write down a correct code which is received in your mobile, then you are actually signed in. AWS secure global infrastructure. So first one is identity and access management. We have discussed what is identity and access management service provided by the particular AWS. So IAM enables you to control who can do what in your AWS account. Okay, user groups, you can create a user, you can create a groups, you can create a role, you can set a permission. Already it has been discussed how to create a user, how to create a group, how to create the roles, how to set the certain permission. Okay, so control and manage, it is centralized and it is secured by default. So AWS account holder can actually give the access to the different user groups, role, and set the permission without sharing the username and password, or you can say credentials. These are the IAM best practices. Create an individual user. So when you create an individual user, multiple users should never use the single user credential. Better control on a user, individual permission, individual credential rotation. This is the second best practices. When you create a permission, grant a least permission. So never give full access permission. Never. So there is a less chance of people making a mistake, and it always easy to open up a permission than to tighten up. Okay.
Third one is manage the permission with the group. So easy to assign the same permission to the multiple user. So let me give you the example. Suppose you have 10 or 15 user, right? So rather than just to give same permission to each and every user, what you can do is you can in a group you can whatever the permission or whatever the access right you will be defining in a group, you can just particular group. Restrict the privilege access further with the condition. So my voice is, I think, breaking. Okay, am I audible? I think there is certain connectivity issues today. Okay, okay, not clear. Okay, so I think there is certain connectivity issues. 1 minute, let me, I think, something I think I need to change. Okay, now I think I should present again. Okay, so here what we are actually explaining, identity, what are the security best practices. Okay, we have started how security responsibilities are shared between AWS and customer. So if you talk about security of a cloud, then it has to be managed and operated by AWS. If you talk about security in cloud, then it has to be maintained and operated by customer. Okay, how you can protect the data service. So to protect the data in a cloud, user has to do an encryption technique, user has to create a security group, and user needs to use the multi-factor authentication. Okay, now I think it is clear, right? My voice is clear. Okay, please reply if my voice is clear. Yes, okay. So these are the identity and access management best practices. Create an individual user, grant a least permission, manage the permission with the group. Manage the permission with the group means if you have number of users, 10 or 15, what you can do, you create one group, include all the groups, users in it. So whatever the changes you will be doing and whatever the set permission you are defining, it will be reflected to all the users. Okay, so that is manage the permission with the group. Restrict the privilege access further with the condition. So additional granularity when defining the permission, you can use the multi-factor authentication service, network specific permission to restrict the privilege access with the certain condition, or you can enable the AWS service API. Okay, you can use the AWS CloudTrail to get logs of a API call. Okay, now what is AWS CloudTrail? It will generate a certain logs of API where each and every logs will be stored in AWS S3 bucket. Okay, simple storage service, that is S3 bucket. So it will help you to easily track activity and check
for granular details. You can create a strong password policy. You can rotate the certain credential regularly whenever you are accessing the rights to the IAM user. You can enable the multi-factor authentication for privileged users. Okay. Same way, use the IAM role to share the access. Okay, you can create temporary generate the certain credential which can be expired यूजर को 2 घंटे के लिए परमिशन देनी है तो यू कैन एक्चुअली सेट द टाइम लिमिट आपको IAM यूजर को 1 दिन के लिए ही परमिशन देनी है तो आफ्टर 24 hours the permission gets expired. Okay, so there are certain services defined in AWS which uses the IAM services. Okay, so these are the certain things that needs to be recapped. User, you can create an individual user. There are permission. You can set the simple permission related to different users. You can create the groups. You can set the condition. You can rotate or configure the password. Okay. A registration, region, availability zone, and endpoint. So each region is a separate geographical area, and each region has a multiple isolated location known as availability zone. Okay, so basically each region has a different availability zone, and according to your requirement you can select this region and availability zone in it. Okay, already I have discussed these are the certain AWS global infrastructure where I think this is not updated global infrastructure nowadays. I think we have a AWS region in Mumbai, we have in the AWS region in Cape Town, in Singapore, then in Brazil, then in I think in Australia also it is I think updated. So we have lots of other global region available in all around the world in terms of AWS. Okay. Again, AWS will recommend that you can accept the default availability zone because this enables us to select the best availability zone for you based on a system health and available capacity. So here what AWS is recommending that automatically AWS will recommend you the best availability zone in a particular region. So it depends on your capacity and system health. Okay, so again if you want to change the availability zone then it's okay, otherwise it will recommend you that this is the availability zone. You can host your data, store your data, or do some other activities with the different services provided by the AWS in this availability zone. So here according to the based on a system health and availability capacity, it will recommend a different AWS availability zone in a region. Okay, and to reduce the data latency in your application, most Amazon Web Service offer a regional endpoint to make the request. These are the security and shared responsibility for AWS services. So there are 3 security and shared responsibility for AWS service. First one is infrastructure service, second one is container service, and third one is abstracted service. What is infrastructure service? So in infrastructure service you can include AWS EC2, EBS, VPC. These are the infrastructure services offered by AWS. Okay, so if there is a question, give the different service in different infrastructure services provided by AWS. So you can write down EC2, this is infrastructure service, EBS, VPC. Okay, and we as you know, with this services you can architect, build a cloud infrastructure using the technology similar to and largely compatible with different on-premises solution. Second one is, see,
you can check the image also. So basically, Amazon AWS is divided into two parts. One is managed by AWS customer, and another is managed by AWS services, Amazon Web Services. Okay, customer data, platform application, operating system, network, firewall. It will be managed by customer, or it is managed by AWS customer. And if you talk about different services in terms of compute, storage, networking, then it will be, and AWS global region and availability zone, it will be managed by AWS itself. Same way, what is container service? So if you talk about container service, where you store the data, so an Amazon database service like RDS, EMR, Elastic Beanstalk. Okay, these are the container services which run on a separate Amazon EC2 and other infrastructure instances. So user don't need to manage the operating system or platform layer. Everything will be done by the AWS. Okay, just you need to manage control such as firewall rules, managing the platform level identity and access management separately from IAM. Same way, abstracted service. Now, what is abstracted service? It is one kind of higher level storage, database, and messaging services, such as you can take the example of Amazon S3. It is one kind of higher level database storage. Same way, Amazon Glacier. I think it is not there in your syllabus. What is Amazon Glacier? But it is one kind of database. Same way, Amazon DynamoDB. Okay, same way, Amazon email service, simple email service, SES. Okay, so these services are in the category of abstract services, and it gives you the platform or management layer on which you can build and operate a cloud application. Okay, so basically there are three types of, again I'm repeating, there are three types of AWS services in terms of security and shared responsibility: infrastructure service, container service, and abstracted service. So it can be asked in 1 mark also. Give the different AWS infrastructure service provided by AWS. Okay, give the container service provided by the Amazon Web Service. Give the abstract service provided by the Amazon Web Service. Okay. And there is one tool called Trusted Advisor tool. Now, what is Trusted Advisor tool? Actually, it is one kind of service provided by the AWS, which gives you the snapshot of your, you can say, service, and helps to identify the common security misconfiguration and how you can improve the system performance. Okay, so that is one tool. Like I can give you the example, in our mobile phone we have one option called analyze your phone, right? When you click on to analyze your phone, or you can say, what you can say, in a, I think in a Android we have one option called, I think, let me check. Device care. There is one option called device care. Okay, so when you click on to device care, there is one option called optimize. So when you click on to the optimize, automatically your device will check, device will be checked 100% in terms of different ways, in terms of battery, in terms of storage, in terms of memory, security, everything. And then it will give you the certain performance that your storage is this, your memory is this, your security is moderate, high, or something related to. So everything will be taken care of. Same way in AWS also, there is one tool called Trusted Advisor tool, and it will
give you the information of your service in terms of cost optimization, performance, security, fault tolerance, and service limit. Okay, please check. Okay, so it is one kind of dashboard where everything can be monitored in that dashboard, that this service will can be these are the performance of your service, this is the security issues, fault tolerance, and how you can optimize. So it will give you all the detail related to it. Okay, this is trusted advisor tool. Same way, how to define and categorize your assets. So your assets are fall into two categories. First one is business information, such as business information, process, and activity. And second one is elements such as your hardware, software, sites, and partner organization. Now, what is asset? So if you can check the image, suppose I'm saying customer facing website application, that is my asset name. So your asset, the owner of this asset is e-commerce team. What is asset category? It is essential. And what will be the dependency in terms of AWS service? So you require EC2, required EB, that is elastic load balancing, ELB, and RDS. Okay, so this is asset name. What will be the asset owner? What will be the asset category? And in which particular asset is dependent on the certain services of AWS. So it is been written. Okay, we are not going into the detail, but just for your information. Suppose personal data. So personal data, HR management system. So that will be asset name. What will be the asset owner? HR. Category is essential, and dependency will be network, AWS Direct Connect. So these are the different services provided by the AWS. Okay. Same way, design your information security management system for your protecting your asset. Okay. So how you can design? Okay, you need to maintain, you need to operate, monitor, review with your information service system management on AWS. Okay, and that is very necessary. Okay, this I think how to manage the user access to your data using privileges, account, and groups. So how you can manage the AWS account? I think we have discussed IAM, identity and access management, where you can create a group, you can create a different user, you can set the roles, everything with the IAM user. Okay, so manage your AWS account with the IAM service provided by the AWS, and this IAM service can create a different IAM users, groups, and roles to set the permission and to set the defined role. Okay, so this up to this we will be holding, because we have, I think we have 10 to 15 PPTs and I can complete. Okay, and I think it can be completed. But what I'm doing here right now is, out of 14, there are 14 students. What you need to do is, I'm giving you the time. Still it is 12:45, right? So I'm giving you the time. After 20 or 30 minutes, I will ask you how many practicals you have done. Okay, we have already completed all the practicals. Yeah, well, yes. I don't know how many practicals you have done, but I will ask, and you need to show me at least one practical related to AWS. Okay, you can present your screen, and then what you can do is, you need to actually what you need to do is, you need to actually show that, sir, I have done this IAM, sure, I have done this VPC, sir, I have done this EC2 practical. Okay, so present your screen and show it to me. Okay, then and then I will able to know that whether from my part I'm explaining everything, I'm uploading everything.
but whether you are actually doing or not, I don't know. Okay, so I'm giving you 20 to 30 minutes, and then I'll be actually telling you to anybody to telling you to present your screen. Okay, don't leave. Okay, uh, actually, if you are not able to do it, just frankly tell me, sir, I have done only one practical and I have done this. I don't mind, but you are leaving the Google Meet. That is not the answer, or that is not the expectation I am uh, having from you guys. Okay, so please do not leave the Google Meet. Whatever you have done, present it, show me, so I could able to understand. Okay, do not leave. That is not the solution, because still you have a final exam of cloud computing, you have a viva as well. So I will check your attendance, and I will again tell you, you present the screen if you learn something related to AWS, something related to cloud computing, please present the screen. Okay, so after 20 or 30 minutes, I will ask you to present your screen and show me what kind of things in a practical you have done. Okay, don't think like that I will be scolding you. Just I will let you, I will tell you what to do or what not to do. Okay, so see, out of 15 students, only 2 or 3 students are every time is actually uh, replying, or every time they are actually sharing the screen or doing the practical. Rest of you, what you are doing, I don't know. So I will tell you to present your screen today itself. Okay, so I'm giving you the time. I will give you the time. Still it is 12:45. So take actually 20 to 30 minutes, and then we will discuss. Okay, so I'm muting myself. Okay.
Okay, anybody wants to say something, or I should actually tell everybody to actually present something? Okay, Aman, यस सर। what you have done up till now? सर प्रैक्टिकल तो सारे किए हैं आपने जितने भी करवाए थे। Mm-hmm. हाँ सर, अभी तो याद तो सर, अभी एक अमेजोन इलास्टिक बीन स्टॉक का भी मैं परफॉर्म कर रहा था। Okay. हाँ सर। Hishit, 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 please unmute and tell what you have done up till now. Hishit, come on. यस सर। सर मेरा में तो मैं अकाउंट ही नहीं बन रहा। हेलो सर। हाँ तो नहीं तो मैंने बोला था ना आपको कि हाँ वो हाँ दूसरे से सर, आप फिर ले मेरे लो। दादा की तबीयत खराब हो गई, इसलिए मेरे को है ना हर हफ्ते 2-3 दिन के लिए हॉस्पिटल जाना होता है उनके साथ। इसलिए मैंने प्रैक्टिकल तो उन्हीं में से थोड़े थोड़े किए थे। मतलब प्रैक्टिकल 2 किया था, सिर्फ 2 ही किया था, और 1 तो मैंने किया हुआ था सर, कि जो इंस्टॉल करना है ना वो एडब्ल्यूएस में तो एक ही किया है सर मैंने। ओके, मोहिल, I think Hishit and Mohil are not replying. So I should write absent. Okay. Nimit, you have done, right? All the practicals, I think. Yes, sir, done. Parth, Parth also, I think, done. Parth, Hanushali. Yes, sir. Parth, poker. How many practicals you have done? Parth, poker. Okay, Tilak. Okay. Tilak, how many practicals you have done? Umang, Sir, all done. done. Okay. सर एक बाकी है सर, हाँ, लास्ट 7th। ओके, 2 प्रैक्टिकल हुए हैं। ओके, तो बाकी के सब कब करोगे आप सब? सी अरे वी हैव टाइम। ओके, सो आई एम टेलिंग एवरीबडी, राइट? सी, मैं सिखा सकता हूँ, मैं आपको प्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं आपको AWS एजुकेट का अकाउंट कैसे बनता है वो सिखा सकता हूँ। अगर आप करोगे नहीं तो वो तो वही होगा ना। सी, ये तो क्या होगा फिर, स्पून फीडिंग हो गई कि मैं ही आपको प्रैक्टिकल दूं, मैं वो प्रैक्टिकल आप मुझे वापस सबमिट करो, तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं आएगा। ठीक है, मैंने सब दिया हुआ है। अगर आप प्रैक्टिकली परफॉर्म ही नहीं करोगे, हाउ वी कैन actually you will get the knowledge of AWS, right? The basic thing here, right, is कि अगर आप नहीं कर रहे हो कुछ घर पे जाके, घर पे कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ थ्योरी के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो प्लेसमेंट में आपको बहुत ही डिफिकल्ट पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते सर क्लाउड में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो थोड़ा तो आपको इंटरेस्ट करना पड़ेगा ना। आपको भी पता है अगर आप लेटर स्टेजेस में जाओगे तो आपको कोई भी कंपनी में कभी भी ये टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। कोई भी कंपनी, अभी सब कंपनी क्लाउड के ऊपर शिफ्ट हो रही है, और अगर आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, GCP नहीं आ रहा है, AWS नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज, राइट? और मैंने प्रैक्टिकली ऐसे डाले हैं कि आप इजीली कर सकते हो। इजी है, 10-10 15-15 मिनट के प्रैक्टिकल है। अगर नहीं कर रहे हो तो वो तो क्या होगा कि मैं सिखा रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे हो। हमने 8 से 9 लैब तो कंप्लीट कर दी, और स्टिल मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर अगर 25-50 जने में से 10 जने ही कर रहे हैं, बाकी 40 जने क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, सो एटलीस्ट you should actually take the initiative in a online session. So अगर सी आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो वी आई थिंक आई शुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर डूइंग एट योर होम, राइट? अटेंडेंस डजंट मैटर। यहाँ आ रहे हो, सिर्फ ज्वाइन हो रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम? मतलब अटेंडेंस तो मैं आपको दे ही दूंगा, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप? मैं सिर्फ वाइवा में यही पूछूंगा प्रैक्टिकल। सी, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, whenever there will be a viva date of cloud computing, you need to be ready with the practicals only. Don't think that sir will ask a theory. मैं आपको प्रैक्टिकल AWS का पूछूंगा, प्रैक्टिकल IAM कैसे होता है समझाइए।
आप दिखाइए AWS एजुकेट अकाउंट। आप नहीं बोल सकते सर मेरा AWS का अकाउंट नहीं था, तो you take the credential of other students, those who have completed. AWS giving enough credits to actually complete all the practical 3 to 4 times. ओके मैंने इतने प्रैक्टिकल ही नहीं रखे, 7 या 8 ही प्रैक्टिकल है, और 100 या 150 क्रेडिट AWS एजुकेट देती है। तो आप दूसरे से रिक्वेस्ट करिए आपके फ्रेंड से कि आप एक बार उसके पास से क्रेडेंशियल ले लीजिए और कंप्लीट कीजिए। पर आप ऐसा बोलोगे सर मेरा हो ही नहीं रहा है, तो सी 50 जने में से 40 का हो रहा है, मतलब हो रहा है, आपको करना नहीं। ठीक है, एक प्रैक्टिकल खत्म हुआ है, 2 प्रैक्टिकल खत्म हुआ है, शुड आई चेक योर गूगल ड्राइव लिंक एवरीबडी? तो आपने सबने 5-5 प्रैक्टिकल अपलोड किए, या तो आपने किसी से कॉपी करके ले लिया है, या तो आपने खुद किए, दोनों में से एक। अगर खुद किए हैं तो आप दिखाइए। अभी आपका ये सेमेस्टर चल रहा है, स्टिल वी डोंट हैव अ एंड सेमेस्टर डेट। तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर नहीं कर रहे हो, नहीं हो रहा है, नहीं इंटरेस्ट है, ये आपको आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप किसी कंपनी में ऐसे नहीं बोल सकते कि सर ऑनलाइन सेशन चल रहे थे इसलिए मुझे कुछ आता नहीं था, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा था, मुझे प्रैक्टिकल में कुछ पता नहीं चल रहा था, या मैंने किया नहीं है। मैं सब आपको बोल रहा हूँ, आपको सब प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, आपको कहाँ कैसे करना है सब दे रहा हूँ। अगर आप कर ही नहीं रहे हो तो ये स्पून फीडिंग तो है नहीं छोटे बच्चे की तरह, 1 या 2 साल के, कि मैं आपको सब सिखाऊं और कंपनी वाले आपको लेके जाएंगे मेरे नॉलेज के ऊपर। आपको देखना तो पड़ेगा ना कुछ प्रैक्टिकल कि ये सर ये होता है। अगर नहीं कर रहे हो ऐसा हार्ड प्रैक्टिकल एक भी मैंने रखे ही नहीं है। पर अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आई कैन नॉट हेल्प इट, राइट। मैं तो फिर ऐसा करूंगा कि जिसको इंटरेस्ट है, जो सीखने के लिए आ रहा है, उसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा। बाकी यू टेक योर कॉल। लास्ट में वाइवा आई विल टेक द प्रैक्टिकल। अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आ रहा है, कोई भी प्रैक्टिकल इन टर्म्स ऑफ AWS, आई विल नॉट कंप्लीट योर वाइवा unless and until you complete all the practical related thing and you show it to me in a practical way. Okay, तब आप मुझे मत बोलना कि सर मैं मोबाइल से ज्वाइन हूँ। इट इज कंपल्सरी टू ज्वाइन इन अ लैपटॉप। ठीक है, अभी लॉकडाउन भी खत्म हो गया, ऐसा भी कुछ कहीं लिखा नहीं है कि भाई लॉकडाउन है तो कहीं जा नहीं सकते। यू कैन गो टू योर फ्रेंड्स हाउस एंड यू कैन कंप्लीट योर प्रैक्टिकल इफ यू वांट। ओके, बाहर तो निकल ही रहे हो ना सब अभी, ऐसा तो नहीं है कि लॉकडाउन हो गया फुल्ली। सो सी इट्स योर चॉइस, इट्स योर कॉल। फिर लास्ट में यू डोंट टेल मी कि सर मैंने किया नहीं था और सर आपने ऐसे अच्छे मार्क्स कम मार्क्स क्यों नहीं दिए। आई विल बाइफरकेट ऑल द स्टूडेंट्स, राइट। मैं बाइफरकेट करूंगा। अगर निमित प्रैक्टिकल कर रहा है, पार्थ प्रैक्टिकल कर रहा है और कोई और प्रैक्टिकल कर रहा है, तो उसको अच्छे ही मार्क्स आएंगे क्योंकि उसने सब दिखा है। और आप यहाँ ज्वाइन होके यहाँ सिर्फ अटेंडेंस के लिए आ रहे हो, तो वो अटेंडेंस के मार्क्स आपको मिल जाएंगे, दैट्स इट। ओके, तो नेक्स्ट लैब, अगर स्टिल आई एम गिविंग यू द लैब, नेक्स्ट लैब में आप देख लो। अगर आपका हो गया है तो आप एक बार प्रेजेंट तो कीजिए। मैं कहाँ ऐसा बोल रहा हूँ सब प्रैक्टिकल प्रेजेंट कीजिए, पर सर मैंने VPC किया है, मैंने EC2 किया है, सर मैंने IIM किया है, जो भी हो, एक प्रैक्टिकल तो दिखाइए। यहाँ कितने सारे ऐसे स्टूडेंट है कि एक भी प्रैक्टिकल दिखाया ही नहीं है, सिर्फ आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, देन दे आर लीविंग आफ्टर 1.5 hours और certain minutes. Okay, I will not name anybody. और फिर आप का कॉल है कि आप क्या कर रहे हो। Again, I am giving you the time 10 to 15 minutes. If you are do it, then we will finish the lab. Okay, see, out of 16 students, now there are only 10 or 11 students. Many of you are leaving. So leaving is not the only option, right? You are leaving whenever I'm telling you to present, whenever I'm telling you, asking some question, you are leaving the Google Meet, right? और फिर आप बोल रहे हो सर नेटवर्क का इश्यू। हर बार थोड़ी नेटवर्क का इश्यू होगा यार, ठीक है। So I'm taking my actually I am actually giving some time to make you understand everything, but whether you are interested or not, it's up to you.
इट शुड बी टू वे, राइट? वन वे नहीं होगा। एक वे मैं सिखा रहा हूँ, आपको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैसे होगा? ठीक है, अब तो प्रैक्टिकल भी खत्म हो गए, एक दो प्रैक्टिकल तो दिखाइए एडब्ल्यूएस के हिसाब से। हर हर लैब में मुझे ये बोलना पड़ता है, 2 या 3 स्टूडेंट है वो दिखाते हैं, बाकी क्या करते हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, सो वो आपके ऊपर है। आप नहीं, सी वी विल टेक इनिशिएटिव, हम तो सब इनिशिएटिव लेंगे एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी। आप इंटरेस्टेड नहीं हो, एक लेक्चर 2 लेक्चर बाद में फिर आप चले जा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, तो ये तो क्या है कि भाई you are actually fluctuating, you don't know what to do, okay, after some time. So you focus on one thing and then you tell, okay, again I'm giving you the time, again 10 to 15 minutes, and then I will tell you to present if anybody wants to, okay? सर Yes, yes. सर ये इलास्टिक बीन स्टॉक में सर टॉम कैट जरूरी है क्या? सर मेरे नेटबीन्स में क्लास सर्वर है तो उसका ऑप्शन नहीं आता यहाँ पे। किसमें? यहाँ पे उसमें टॉमकैट लिखा ही है ना, टॉमकैट, अपाचे टॉमकैट सिलेक्ट करना है। तो मेरे सर नेटबीन्स के अंदर टॉम कैट सर्वर डाउनलोड नहीं किया हुआ है सर, वो अलग से डाउनलोड करना है। ग्लासफिश में AWS ऑप्शन नहीं देता सर ग्लासफिश चलाने के लिए। हाँ, वो उसमें ऑप्शन है, वो मैटर ही नहीं करता ना सर। हाँ एक्चुअली मैटर नहीं करता है, पर AWS is also giving option which particular server you need to select. और अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो वो डायरेक्टली आप अपलोड करोगे हेलो वर्ल्ड और जो भी जावा में, तो डायरेक्टली वो हो जाएगा। आई थिंक किसने दिखाया था प्रीवियस लैब में, किसने दिखाया था प्रीवियस टू प्रीवियस? सर वो मैंने किया था। हाँ, पार्थ में। हाँ, ऑलरेडी वो बना हुआ था एप्लीकेशन। हाँ, वो थोड़ा टाइम लेगा पर हो जाएगा। Yes, yes. You can concern with the, I think Parth or Nimit, I think other student, I don't know those who have done. ये दोनों ने तो किया है, I think एक ने तो present भी किया था, I think. ठीक है यश? हाँ सर मैं बात पूछ लूँ। हाँ, एक बार सी यू नीड टू ट्राई इट। आपने वीडियो देखा? मैंने हाँ अपलोड भी देखा किया था, मुझे यही कंफ्यूजन था कि उसमें जो टॉम कैट सेलेक्ट है तो मुझे लगा कि टॉम जरूरी होगा इसलिए। और वो आई थिंक मैंने एक वर्ड फाइल भी अपलोड की है, वो भी एक बार देख लो। ये सर मेरे वही देख रहा था। ओके, एक बार ट्राई करो, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बोलो। आप आफ्टर 2 o'clock और 3 o'clock वी कैन शेड्यूल इट, ओके, इफ यू वांट टू or do again a practical, okay? But first you need to check the video word file and then you concern with the friends those who have completed, and then if you have any doubt you concern me. I will schedule one Google Meet again and we can actually do it, okay? Any other students wants to do anything related to any practical? See, लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर थ्योरी पूरा पार्ट है, सिक्योरिटी रिलायबिलिटी मींस आर्किटेक्टिंग विद गूगल बेस्ट प्रैक्टिसेस। वो मैं तो उसी 1 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा। मेरा कंसर्न यही है आपको AWS में प्रैक्टिकली कितना नॉलेज मिला। ठीक है, अगर मैंने सिखाया है तो 10 स्टूडेंट भी ऐसा बोलते हैं सर मैंने 2 प्रैक्टिकल अपने आप किए हैं AWS में, मुझे पता चल रहा है, दैट्स इट, गुड। और अगर कुछ किया ही नहीं है मींस you are not interested or you are not able to understand or you don't want to do anything in online session, just you need attendance. Now it's up to you कि आप किस में belong करते हो। Okay, so again I'm giving you 10 minutes, then we can I think check what you have done. सर हाँ सर, ये AWS में वो रिमोट अपना वो चल जाता है डेटाबेस? रिमोट डेटाबेस मतलब कौन सा? मतलब सर, मतलब ये अभी तो डेटाबेस हमारा जो है वो लोकल होस्ट पे है ना, हाँ, तो वो डायरेक्ट उस पे अपना इंस्टेंस पे चलाना हो तो डेटाबेस को। हाँ तो वो RDS है, रिलेशनल हाँ, डेटाबेस वही। सर्विस, तो वो हो सकता है, पर वो आपके अकाउंट में शायद यूज हाँ, नहीं होगा। नहीं अवेलेबल उसके। हाँ, तो वो RDS अगर आपको चलाना है तो आपके पास AWS का अकाउंट होना चाहिए जिसमें क्रेडिट कार्ड का डिटेल। हाँ, पेमेंट ऑप्शन मांग रहा हो। हाँ, तो पेमेंट नहीं देते हैं पर पहले 150 या 200 क्रेडिट आपको देते हैं, और RDS अगर आपको यूज करना है तो AWS का अकाउंट जो होता है जिसमें क्रेडिट कार्ड का डिटेल और वो सब आपको फिल करना पड़ता है, वो आपको वो करना पड़ेगा अकाउंट। ओके सर,
हाँ ठीक। क्योंकि मैं ऐसे ही आप सबको ऐसा नहीं बोल सकता कि AWS का अकाउंट क्रिएट करो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा पता है, आप AWS का अकाउंट तो क्रिएट हो जाएगा सबसे, क्रेडिट कार्ड डिटेल फिल करके, पर अगर गलती से भी कोई भी इंस्टेंस, गलती से भी कोई आईपी रिलेट हो गया या कनेक्ट हो गया, गलती से भी कुछ क्या बोलते हैं ये S3 में कुछ आपने स्टोर कर दिया, तो उसका चार्जेस है, और फिर चार्जेस इतना बढ़ जाता है कि दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर क्रेडिट कार्ड डिटेल और क्रेडिट कार्ड अकाउंट। ठीक है, फिर ओनली ऑप्शन क्या रहता है, ठीक है 15-20 हजार होता है, एक स्टूडेंट को ही हुआ था, 10,000 उसने AWS का अकाउंट क्रिएट किया और 10,000 का क्रेडिट कार्ड बिल आया, क्यों कि EC2 का इंस्टेंस उसका चालू रह गया था, और EC2 का इंस्टेंस क्या है कि 200 घंटे आई थिंक 100 या 200 आवर्स वो फ्री है, और उससे ज्यादा आपका लिमिट होगा तो उसका वो चार्ज लेते हैं। सेम वे आपने VPC जब क्रिएट किया तो आपने क्या किया था, इलास्टिक आईपी क्रिएट किया था, फिर वो क्या बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स और वो कुछ क्रिएट किया था, वो भी आपको टर्मिनेट करना होता है, तो वो भी अगर चालू हो गया तो उसका क्या होता है, चार्जेस लगता है। तो उसका जो स्टूडेंट का 10,000 क्रेडिट कार्ड का बिल रिफ्लेक्ट आया था अकाउंट में AWS का, फिर उसने मेल किया तो उसका रिफंड कर दिया था, उसका हुआ था, फिर एक दूसरे स्टूडेंट्स का था उसका 15,000 बिल आया था, तो उसका रिफंड नहीं किया। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा था कि भाई यू टेल योर क्रेडिट कार्ड, मतलब जो बैंक है उसके बैंक को बोल दो कि आपका क्रेडिट कार्ड लॉस्ट हो गया है, मुझे दूसरा इश्यू कीजिए, दूसरे कार्ड दूसरे नंबर का, तो वही ऑप्शन रहता है। नहीं तो क्या होता है कि वो 15,000 आपको भरने पड़ते हैं। ओके, सो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो अगर आप कभी भी, ये भी नहीं, कभी भी आप AWS अकाउंट ओपन करें तो एक बार जब भी कोई भी इंस्टेंस बनाए, VPC यूज करें, कोई भी सर्विस AWS का यूज करें, आप वो टर्मिनेट कीजिए जब भी क्लोज करे अकाउंट तब। नहीं तो क्या होगा कि वो AWS 1-2 महीने तो आपसे बिल नहीं लेगा, पर जैसे ही 2 महीने या 3 महीने होगा ऑटोमेटिकली आपका बिल आपके क्रेडिट कार्ड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको इसलिए मैंने इस बार किसी को फोर्स नहीं किया है कि भाई आप AWS का अकाउंट बनाइए, आप AWS एजुकेट का अकाउंट ही बनाइए जिसमें आपको 150 या 100 क्रेडिट मिलते हैं, और दैट इज इनफ फॉर यू गाइस टू एक्चुअली कंप्लीट अ प्रैक्टिस। ओके, वो क्रेडिट जो है वो आप दूसरे को भी दे सकते हो, उसमें कोई है नहीं। ठीक है, किसी का नहीं बना है तो आप शेयर कीजिए क्रेडिट और वो यूज कर सकते हो। ओके सर, हाँ निमित सर ये IAM का प्रैक्टिकल कैसे अपलोड करें सर हम? सी IAM का मैंने पहले से ही बोला है कि IAMC जो आपका AWS एजुकेट अकाउंट है ना, वो इटसेल्फ IAM यूजर अकाउंट। तो मैंने इसलिए ही आपको ऐसा बोला था कि मेरे पास जो रेफरेंस मैंने वर्ड फाइल जो दी है वो मैंने खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो आप वो आपके हिसाब से वो आप देख लीजिए, आप वीडियो देख लीजिए और फिर वो आप यूज कर सकते हो आपके प्रैक्टिकल में IAM। ठीक है, मेरा ही प्रैक्टिकल आप यूज कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हो कि आप कोई अगर आपको मिल जाता है किसी का AWS का अकाउंट किसी के पास है तो वो आप परफॉर्म कर सकते हो। आई विल नॉट फोर्स यू टू मेक अ AWS अकाउंट फॉर ओनली IAM practical, right? Any other query? Okay, so just write it down your enrollment number in a chat box. I will mark you present. Enrollment number, 1 minute. जो हाँ 9180